Greetings and welcome back on the part 3 of Child Development Series with Ruqaiya Khan. In our today's discussion, our primary topic, our primary focus will be on the intricate journey of parents and how they deal with the challenges, how they deal with the joys of being a new parent. And this episode will be helpful for all the new parents out there. So stay tuned as we dive deep into the different aspects of parenthood. Welcome, Ruqaiya, back again on my show, and it's glad to meet you again. Hope you're doing great there. I'm doing very well, thank you. And it's lovely to be back again on this part 3. Thank you for having me again. Yeah, thank you, Ruqaiya. So the first, discussion which I want to ask is, what are the common problems and the common challenges which a new parent faces? That's a very interesting one because, as we know, a new parent, the emotions are very, very high. So the excitement is there, the emotions are there. And we do have a lot of people who are constantly trying to guide you, trying to tell you, do this, do that, do this, do that. So you have so many things to think of and you try and do everything. But through that process and through the pregnancy, you are getting exhausted. Yes. As a mother, your mother, you do get exhausted. And sometimes, what happens is that you are in a situation where, you sort of lose a bit of your own control on things as well, So the common things that you see in about a parent, the very first thing is about adjusting to the new role. Okay, so that new role of how it is and the responsibilities. Okay, and that goes for a lot of us in so many different ways, the excitements and things. The other thing that comes across the challenges are lack of sleep and fatigue, and then that affects everything, I can see yourself smiling there, so it's probably to add, I have gone from the same journey. I have been experienced. I have that lack of sleep, and it do affects your entire day, do affects the entire thing at different aspects of life also. absolutely. Yes, बहुत ही मीन्स बहुत ही चीजों में हम इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत से फाइट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट होती है विद द फैमिली मेंबर्स आल्सो बिकॉज वी आर मेंटली नॉट स्टेबल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ऐसा भी होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे कहते हैं ना कि जैसे उसमें है ना कि कहा होता है कि जान है तो जहान है, टाइप ऑफ थिंग है ना. और जब खास तौर से जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी है, जिस्म औरत का जो है उससे जा रही है, और फिर उसके बाद सारे लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो, इस तरीके से नहीं करना, ऐसे नहीं, तो एक कंफ्यूजन सी भी हो जाती है. उसमें भी इंसान जो है ना जहनी तौर से वो थक जाते हैं काफी, जो है ना मायों को जो है ना वो थकना. और फिर जब बेबी आ जाता है तो उसकी वजह से फिर और थकावट होती है, वो रूटीन होती है, तुम्हारे साथ हॉर्मोन्स होते हैं, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि किस तरीके से होता है. और अगर if you think of it from a normal perspective, if we get tired on a normal day, how does it affect us? That's just a very small thing. I mean, but as a mother, you've just gave birth, you brought a new child in, you're getting used to this role and responsibility. और फिर आगे चल के भी ये भी होता है कि किस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करें, ठीक है ना. यानी कि घर के भी जरूरतें होती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे को भी संभालना है, खुद को भी लुक आफ्टर करना है, किस तरीके से करें, बाकी जो यस, इसमें फैमिली भी जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है टू सपोर्ट अ वुमन, बिल्कुल बिल्कुल. फैमिली लेकिन हर वक्त हर किसी के पास फैमिली मौजूद नहीं होती, सपोर्ट नेटवर्क सबके पास नहीं होता. यस यस. खास अगर हम कहीं बाहर प्रदेश में हैं या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं है कोई, तो वहां पे भी जो है ना उसका बहुत होता है, तुम बिल्कुल तन्हा होते हो, यानी कि अकेले होते हो, किस तरीके से बात करना है, किससे बात करो, कहाँ से जाओ, एडवाइस करने वाला है. और फिर हम किससे एडवाइस लेते हैं हम अपने बड़ों से, बैक होम एडवाइस लेते हैं. वो they are not in that same situation where we are. The advice that's given to us is based on their understanding. और फिर हम उस पे अमल करते हैं. जब हम उस पे अमल करते हैं, things sometimes don't work the right way, जिस तरीके से होनी चाहिए. तो ये भी सारी चीजें adds to that challenge जो है ना, that we go through as a new parent, and trying to balance things out of it.
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ना हमें बहुत चैलेंजिंग है, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, यही दो चार चीजें नहीं होती। डेली हम्म। एक लाइफ के साथ जो है ना एक नई जिम्मेदारी है, बच्चा है, उसकी हम्म। फीडिंग है, उसकी सारी चीजें जो है ना, ये सारी एक चैलेंज होती है, बिकॉज ये सब कुछ सीखना होता है एक नई माँ को, यू नो। यस, सीखना जो है, इट्स अ चैलेंज, नो मैटर इट्स अ हाउ वी लुक चैलेंज। एट, यस, यस। यू और नो। एक बार जो है हम ट्रैक पर आ जाते हैं, व्हेन वी यूज्ड टू गेट to that routine, when the baby is sleeping, when it is a feeding time, every hour or every half an hour, अगर उन्हें समझ जाता है एक न्यू पेरेंट को, एक न्यू मदर को, तो थोड़ी चीजें जो है वो स्मूथ होना शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, यानी कि रूटीन में लेके आना बहुत जरूरी होता है। यस, अक्सर यस। हम देख, नई माँ जो होती है ना, या नई फैमिलीज जो है ना, वो बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को अडेप्ट कर लेते हैं, बजाय ये कि हम दूसरी तरह से करें, हम बच्चे को अपने उससे ढालें हम उसमें। हम्म। तो बच्चा सो रहा है तो उसी वक्त जो है ना, कि वो रात देर तक जाग रहा है, तो फिर बाकी भी फैमिली सब रात देर तक जाग रही है, हम्म। क्योंकि उन्होंने भी सुबह उठना होता है, तो अपनी जिम्मेदारियां करनी है, लेकिन वो थकन इतनी होती है, वो नहीं सो सकते। वो सारी एक रूटीन को अपसेट करता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम जैसे भी हो सकता है, we should try to put the child into a routine soon as possible, and then we can And have a lot, yes, and the more of. most difficult part is for a working mother, if she gets holidays of 3 months maternity leave. So that is the biggest challenge. After 3 months, she has to return back to work, और वो सारी routine में adjust करना, तो ये सबसे एक बड़ा challenge हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर किसी के जो है ना, जाहिर है एवरीबडी गोज थ्रू वेरी डिफरेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। Yes, और yes. डिलीवरी भी जो है मुख्तलिफ तरीकों से होती है, सो ऑल दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट। कभी किसी के लिए जो है ना रिकवरी ज्यादा लंबी हो जाती है, Hmm. या वो इमोशनल रोलर कोस्टर से ऐसे गुजरे हैं फ्रॉम द चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, कि अभी वो खुद जो है ना, अभी अपने आप को नहीं संभाल पाई हैं टू Hmm. गेट इनटू अ रूटीन ऑफ गोइंग बैक टू वर्क। और Yes, वो जो है ना, वर्क और डेली रूटीन, बेबी को संभालना, ये करना बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ सपोर्ट नेटवर्क। अगर सपोर्ट नेटवर्क है, फैमिली है, Hmm. तो नो डाउट इट डज मेक थिंग्स इजी फॉर यू। बट बीइंग अ न्यू मम, यू स्टिल वांट टू बी पार्ट ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर चाइल्ड, यानी कि वो जो है ना, हर लम्हा exactly. जो है ना, नहीं मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ। तो Yes, yes. So, yeah, Ruqaiya, moving forward, जब हम sleep deprivation की बात करते हैं, we have discussed this further, like previously also in episodes, that sleep deprivation, a mother, gets trapped in that biggest challenge. उससे कैसे cope करें, when we are not able to get a good sleep? तो जैसे भी अभी हमने कह रहे थे कि जो है ना, अगर नींद पूरी नहीं होती, ठीक है ना, तो सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, इंसान के जिस्म से लेके दिमाग से, सारी रूटीन सब चीजें होती हैं। खुद हमें एडल्ट्स में जो है ना एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है, वी बिकम अ लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, एंड we start to get a bit fidgety, and everything starts to Mood affect swings your. also, occurs a lot in that case. तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं पहले कह रही थी, कि बच्चे को जितनी जल्दी हम रूटीन में लेके आ सकें, हमारे लिए वो बेहतर है, ठीक है ना। सो यूजुअली दे से राउंड अबाउट 8 weeks time, between 6 to 8 weeks is when the child can start to fall into a small routine, Hmm. after they've got a little bit used to being in the world, so that takes time। बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ी वो चेंज है, Hmm. और उसके भी Absolutely. इमोशन कुछ, is 9 months being in the womb, and then now coming out into the world where it's been just so much happening। तो उसके लिए around about 8 weeks के बाद जो है ना, they said you could start to work on a routine for a child। और the most important thing जो है ना इसमें ये है कि sleep when the baby's sleeping, don't rush to do other things because they can all wait। You will have the energy to do all the other things if you catch up with your sleep। ज्यादातर माओं को ये देखा जाता है कि वो सो जाता है तो फिर मैं जल्दी से घर के काम कर लूं, या मैं ये हम्म। कर दूं, या कर दूं। पेंडिंग वर्क्स पूरे कर लूं, जो भी हो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम उसमें अपनी केयर भूल रहे हैं, यस। बिकॉज उसके क्या होगा, यू गोइंग टू क्रैश। और जब वो अपने ऊपर बात ऐसी आ जाती है ना, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योरसेल्फ बैक अप फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फटीग, एंड इट्स लाइक अ बर्नआउट, एंड इट्स यस। वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। सो मेक श्योर कि बच्चे को रूटीन में जितनी जल्दी हो सके हम लेके आ सकते हैं।
हमें करना चाहिए उसके, ताकि वो भी सही टाइम से सोए, हमें भी हो। हमें जब बच्चा दिन में सो रहा हो, बेबी सो रहा हो या कुछ, तो उस वक्त भी कोशिश करें कि हम उसी के साथ थोड़े वक्त के लिए हम भी सो जाएं, ठीक है ना। और अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ केयर जो है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. और अगर आपके पास कोई है जो that can help you or is offering you that, let me take the baby for a little while, you go and sleep, please do that. That's a you know blessing. it's Yes. not going to come often, so make the Yes. most of Yes. it. you Exactly. know Yeah. Exactly. So, Ruqaiya, how can new parents stay informed about the latest parenting trends and research to make informed decisions about their child's upbringing? Okay. क्योंकि अभी बहुत से हैशटैग्स भी चल रहे, ट्रेंडिंग हो रहे इंस्टाग्राम पे, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, न्यू पेरेंट्स कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, एंड व्हाट आर द डिसीजंस। और ये जो है ना, ट्रेंड्स में ही पेरेंट्स सोचते हैं कि so and so person has that much level of followers, so वो एक अच्छे लेवल के इन्फ्लुएंसर है, पेरेंट है, मैं उसी तरह से अपने बच्चे को जो है वो ट्रीट करूंगी, वो सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करूंगी, so that the upbringing will be of that higher level. What is your thoughts on that? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में भी बात करी थी कि हमें कितना जरूरी होता है कि हम अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना। हर बच्चे के अंदर एक एक खासियत है। हर बच्चा जो है ना एक अपनी जो है ना सोच, अपनी तरीके से वो चलेगा, ठीक है ना। हमें वो समझना है। तो रही बात जहाँ पे हम हैशटैग्स आजकल बहुत हैं, ये सारे सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस, वी आर Yes, सराउंडेड बाय yes. इट, deny that. But what we really need to remember is not everything is a one fit for all. Okay? यहाँ पे आके हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, हम कितने भी अगर हम वेट लॉस वगैरह जर्नीज की बात करते हैं, ऐसे करते हैं, किस कदर के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कैसे होते हैं, Yes, yes, only show you the main points because there's a reason behind it. But for yes. some people, those reasons are enough to make them start to follow them and things like that. But it might not work for them. उसमें health benefits जो हैं, या किसी के underlying health conditions हैं, या कुछ other situations in your life that might not make that difference as you see. So इसी तरीके से बच्चों के लिए भी हमें वो देखना है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से बच्चे को जो है ना उसकी तरबियत कर सकते हैं, हमें कैसे करना चाहिए, हमारे घर में हम किस तरीके का माहौल लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं। अब जब हम हैशटैग्स पे देखते हैं, ऑल दिस सोशल मीडिया, देयर आर अदर पीपल्स सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस एंड थिंग्स, एंड यू नॉट एक्सपोज्ड टू इट ऑल, you're only exposed to certain things. It might Yeah. work for your child, it might not work for your child. Okay, Yes. you understanding, the most important thing is you being informed properly about how your child is, okay, what the stages are and how things are happening. We look at certain things, feeding trends है, ये खिला दे रहे, वो कर लेते हैं, ये कर And the लेते हैं। one thing is that screen पर कुछ और है, but the reality is not the same. What they're recording in the camera is a different environment which they are showing, different strategies. But real में we don't know that they are following the same trend or not. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये भी है। और फिर वो भी है ना कि बच्चे की तबीयत, हर बच्चे की तबीयत हाँ. मुख्तलिफ है, हर बच्चा मुख्तलिफ चीजें, आपका बच्चा शायद वो चीज ना खाए जो मेरा बच्चा खाएगा, ठीक है ना। Yes. तो उसका किस तरीके से वो करें, तो ये भी चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, यस यू फॉलो दम, and but don't go with the mind thought to say this is going to change my child. It's a bit more like saying I could Yes. try it, if it fits for Yes. me, if it works for me, then that's good. Yeah, you know that will be, yes. it doesn't, we shouldn't sort of take it. Being involved also in parenting groups, is very helpful to be informed about, Yes. how new, because you learn from other people's experiences, and that is so important, कि और लोगों को जिस तरीके से भी उनके तजर्बे हैं और गुजरे हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। शायद वही बात आ जाती है कि Yes. हम ये ना सही रहे, लेकिन हम सीख लेते हैं कुछ। In that way, we can get the guidance also in a proper way. बिल्कुल, वो चीज शायद हमारे लिए ना फिट हो, लेकिन हम उसको अगर हमारे लिए, लेकिन वो नॉलेज जो हमें मिल चुका है वो हम किसी और को दे सकते हैं, Pass on कर शायद वो सकते हैं. हाँ. शायद उनके लिए वो चल जाए, वो बेहतर रहे उनके लिए, अगर हमारे लिए ना। सो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, डोंट बी डिसहार्टेंड अबाउट इट,
but your knowledge that you've now got can also be shared with other people. It could possibly help. Exactly. So being informed through all the different things, but most importantly is making sure you're speaking to your medical team and the pediatricians as your child is growing and developing, and making sure that whatever's taking place, you're taking them for all their medical checkups, and all these things are very, very On important time, at a very yes. सही टाइम से लेके जाएं, उसकी इम्पोर्टेंस हम रखें कि किस तरीके से है, और जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, कि वो प्रोफेशनल्स हैं और उनकी जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उनका भी तजर्बा कहता है, सोचना चाहिए उसका. तो it's about being in touch with as many ways as you can, but not concreting it, because just keeping in mind that you're going to try. Don't say this is what I want to be. It's about trying and looking for Yes. those small improvements that fit for you and how your surrounding and your environment is going to become better. तो इसी तरीकों से जो है ना हम इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं. And we have to keep up with the trend as well. So social media, yes, sab kuch, it has to be, it's a big part Yes. in our life. Yes. So, Ruqaiya, if we talk about infant care and safety measures, what are the most important safety measures which we can take? Like, for example, अगर हम कोई infant को सुला रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि elders used to tell that pillows रखना चाहिए side में so that they will not fall, or don't let him to sleep separately on a different bed. तो वो सारे एक जो है गिरने का डर रहता है. और बहुत से मीन सोने के टाइम पर या खिलाने के टाइम पे जो भी है मेजर्स, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, सो दैट फियर इज आल्सो इन द माइंड कि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं. कुछ कोई चीज से इफ ही इज कैचिंग फीवर, ही और शी इज कैचिंग फीवर, देन हम सोचने लगते हैं कोई हमारी गलती तो नहीं जो फीवर है. तो व्हाट मेजर्स व्हिच वी कैन टेक सो दैट अ पेरेंट कैन स्टे कॉन्फिडेंट, यू नो. तो ये इसमें सबसे पहली बात ये है कि जब हम इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस में, यानी कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं, मेडिकल टीम है, हेल्थ प्रोफेशंस हैं, जब हमारा इनके साथ ताल्लुक रहेगा ना, तो दे विल आल्सो शेयर इंफॉर्मेशन विद यू. ओके, द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द न्यूबॉर्न या बेबी है, किस तरीके से करना है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो सामने आती हैं ना, कि जिन पे थोड़ा सा जो है ना हमें गौर देना चाहिए हर तरीके से, तो उसमें ये है कि हम बच्चे को, क्रूशल बच्चा सो कैसे रहा है, जस्ट लाइक यू टच कि हम बच्चे को सुला कैसे रहे हैं. अब देखिए छोटा बच्चा है और बहुत सारे हम यानी कि ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ बच्चा एक ही बेड पे सोता है, ठीक है ना. अगर हम देखें, अगर हम इतने थके हुए हैं और हम सो रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने करवट ले ली और वो आपके नीचे आ गया या आप उसके ऊपर आ गए, उसकी हिम्मत तो है नहीं कि वो मार जगा सके या कुछ कर सके, यस ठीक है ना. तो यस यस. चीजें होती हैं बिकॉज obviously science know यानी के हिसाब से या कुछ है, they understand the body's fatigue, especially for the mom, Yes. तो इसी वजह से जो है ना, understanding the sleep deprivation, the consequences that it could have. तो अगर हम थोड़े से फासले पे बच्चे को सुलाएं, जहाँ पे हमें उठ के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फीडिंग करनी है बच्चे को, हम उठ के देंगे तो हम आंखें खुल जाएंगी हमारी, जो है ना, हम बच्चे को लेने जाएंगे, more alert, we'll be more aware of what's that environment. Yes. So it makes things a lot easier. In regards to sleeping with a pillow, so again, soft furnishing is not recommended for children. ठीक है ना, उसमें has impacts on the child's breathing. Now, for example, अगर हम बेड पे बच्चे को सुला रहे हैं, कॉट में सुलाते हैं, ठीक है, और हम जहाँ पे सर तकिया रखा होता है हम वहां पे रखते हैं, तो बाकी सारा निचला हिस्सा कॉट का खाली है, बेबी रिगल्स, वो रिगल करते करते कॉट के दूसरे से नीचे को जा सकता है इजीली, और वहां ब्लैंकेट पड़ा हुआ, ब्लैंकेट के नीचे चला गया, उसको सफिकेशन होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, नहीं पता चलेगा. तो यहाँ स्लीप वेल, जैसे हम यूके वगैरह में हमारे वो चलता है स्लीप वेल, यहाँ पे भी इस तरह से चल रहे हैं. तो उनमें यह था कि let the baby sleep at the end of the cot, so there's no way for them to go down, या कि वो रिगल नहीं कर सकते. सो ये चीजें होती हैं. या कि सॉफ्ट फर्निशिंग में जो है ना, the baby can toss the head round, breathing के साथ, it's all about breathing. And secondly, जब you put a pillow underneath, the breathing does get affected. So the next like that all the time, वो छोटा बच्चा is just learning how to do all these things in the world outside. So उसके लिए भी ये सारी चीजें important हैं कि किस तरीके से हम करते हैं. So that is one very important
पार्ट ऑफ सेफ्टी, अबाउट थिंकिंग अबाउट द स्लीप। उसके बाद जो है ना हमें यही देखना है कि जो है ना उसका जो एनवायरनमेंट है, हम एनवायरनमेंट में किस तरीके से एनवायरनमेंट में हेल्थ है, हाइजीन है, ये सारी हम्म। चीजें सोचनी है कि हाइजीनिक है हम किस तरीके से, यस, बिकॉज क्या अभी जो है ना जस्ट कम इनटू द वर्ल्ड, so we don't know how their body is going to react, how their skin is going to react, how their we health just is. know that they are very, fragile in a way to catch infections and all. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत डेलिकेट Mm. होता है उनका इस वक्त जो Yes, है ना yes. बेबी डेलिकेट होता है कि छोटी छोटी सी भी चीजें जो है उसको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेंगी। सो बीइंग Mm. अवेयर ऑफ दीज थिंग्स इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट कि ना हम इन चीजों से अवेयर हैं और Mm. सुने, हमें यानी कि प्रोफेशनल राय हमें लेनी चाहिए। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे तो बच्चे ऐसे पल गए थे, मैंने तो कोई ऐसे नहीं Mm. किए, Yes, we भी hear डोंट it every time. ये Yes. तो छोटे छोटे, बट वक्त के साथ साथ जो है ना हमें थोड़ी सी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो हमें इनको भी बिल्कुल। फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरीके से है। और बच्चे को बाहर लेके जाते वक्त कार सीट्स इज अनदर थिंग एज वेल, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं Hmm. उसमें हम किसी से बाहर बच्चे को लेके जा रहे हैं, आर वी यूजिंग कार सीट्स, आर वी यूजिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन, किस Yes, तरीके से that हमें। is very important to use, back seats for which is recommended for kids. ये सो ऑल दीज थिंग्स जो है ना हमें सोचनी चाहिए। बहुत सारे होते हैं हम गोदी में लेके बच्चों को बैठा लेते हैं हाँ, और फिर ऐसा जो है ना होता है कई families में, they follow this thing. ये खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, it's so many things can happen Yes, anytime. yes. It's all about precaution. It's all about making sure that we understand and we're aware of the safety aspects of what we're doing, and just making sure that we're providing love and attention, for the child as well. It's very important. Yes. Making sure, we're there for them when they need it and understanding our child. What does that cry mean? वो जो आवाज आ रही है रोते वक्त, वो ये कौन से रोना है? ये भूख का रोना हाँ, है, ये चेंज होने का रोना है, या गोदी में उठाने का रोना है, ये कौन सा और रोना एक है? मदर जो इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है कि व्हाट टाइप, ऐसे हंगर का रोना है या फिर कुछ और है या फिर सो रहा है बच्चा, तो ये बहुत इजीली एक माँ जो है वो समझ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, और ये यहीं पे ही नहीं खत्म होती, इसके अलावा बहुत सारी जो है ना ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं जैसे जैसे हम करते हैं, और एग्जैक्टली, हमारा एंड इफ एक्सपीरियंस ये टॉपिक इतना वाइड है दैट इफ वी बहुत। कीप ऑन टॉकिंग ऑन इट, पूरा दिन भी जो है वो कम पड़ जाएगा। सो यानी कि इट्स सच अ मेरे ग्रेट टॉपिक। एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस को भी हम बस, और किसी की कुछ ना बात करें, हम दोनों बस अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो सारा तो दिन गुजर सकता एग्जैक्टली यस, वो तो है ही। सो रुकैया, बीइंग अ पेरेंट कोच, आपके पास बहुत से पेरेंट्स जो है वो काउंसलिंग के लिए या फिर अपनी स्टोरी शेयर करने भी आते होंगे, तो ऐसी कौन सी सक्सेसफुल और मेमोरेबल स्टोरीज यू कैन शेयर विद अस टुडे? है। गोश, कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए हैं जिनके साथ जो है ना मैंने काम किया है, सपोर्ट किया है, और I would definitely say it's a blessing, okay, that to be in a position where you can help somebody, or where you are, where somebody else can feel that from you, कि तुम कि ये मेरी हेल्प हो सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है, कुछ कोई कर हम्म। सकता है। तो इसी तरीके से, जैसे मैंने पहले भी अपने एपिसोड में जिक्र किया था कि ऑब्वियसली यूके में काफी काम है, यानी कि जहाँ पे मैं कर रही थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आते हैं, हम्म। बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, लैंग्वेज बैरियर्स बहुत हैं। हम्म। पर माओ के लिए जो है ना वहाँ पे, obviously English is not the first language for a lot of people, even हमारे इंडिया एग्जैक्टली। पाकिस्तान की बांग्लादेश से जो है ना जाते हैं, एंड हम्म। स्पेशली जैसे ये हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट टाइम मॉम्स जो है ना, हम्म। जो यस। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में देर एक्सपीरियंसिंग प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, जहाँ पे उनको जबान का मसला है, दे डोंट हम्म। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट डज व्हाट मीन, डॉक्टर कुछ कह रहा है, हाँ, एंड फैसिलिटीज हर तरीके की नहीं होती वहां पे और मौजूद, अगर जैसे हाफ कि हम। नॉलेज अगर समझ में आए, देन हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अगर हमें आधी बातें। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो I've been very fortunate to be supporting young moms on their journey of हम्म। parenthood, from the point of pregnancy to birth and then afterwards as well. तो इस तरह से, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत सारी मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, और हर किसी की अपनी अपनी वो है। तो हम्म। ये कि मैंने हमेशा जो है ना यानी कि क्लासेस रन बहुत की हैं ऑन पेरेंटिंग, कि जहाँ हम्म। पे मैं सबके साथ इन चीजों को शेयर कर सकूं पहले,
before they go into a stage of like, from pregnancy going into labor, giving birth. तो ये सारी चीजें जो है ना इस तरीके से आके they've always been a success because they know what to expect. ये जानते हुए भी everybody's story is going to be the same or situation is going to be the same. But अगर आप पहले से किसी ने prepare कर दिया कि ये हो सकता है, ऐसे नहीं भी हो सकता, शायद ये हो जाए, इस तरीके से है. और मैं बहुत सारी और यानी फीमेल्स को हॉस्पिटल लेकर जाना उनके साथ और उनको वहां पे फिर वो सारा सिस्टम दिखाना. तो अगर नर्सेज वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर रही हैं तो इनको कुछ अंदाजा हो जाता है कि ठीक है ये बात हो रही है, ठीक है ना. एंड दैट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल हैविंग being blessed again and having the skill of multilingual language is amazing. Yes. And that is that's one success that I can say has made me so successful, having different languages, being able to communicate in these different languages and helping them, That's a blessing. That's a true blessing that we can understand so many languages. And yes, so that we can communicate people on different levels. Absolutely. And मैं ये कहती हूँ बच्चों को जो है ना जितनी ज़बानें सिखाई जाए ना from a young age, इसीलिए तो अभी स्कूल्स में भी जो है फ्रेंच, स्पेनिश ये सब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसकी क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं. That's really great. और बहुत जरूरी होता है ये जो है ना क्योंकि जो यंग एज में बच्चा लैंग्वेजेस सीख लेगा ना, they will stay with them and they will learn as many languages that you throw at them. They will learn them. हमें बहुत मुश्किल है इस उम्र में, लेकिन बच्चे सीख लेते हैं. And it also helps to wider the perspective. So बहुत जाके भी लाइफ में जो है ना it's key. आजकल अगर देखा जाए तो इतना पूछते हैं what language skills do you have? How can you help? तो हम पहले बस इंग्लिश में फंस जाते थे कि ठीक है इंग्लिश अपनी जबान बोलना इतनी उसकी जो है ना वो नहीं होती थी. लेकिन अब जो है we need now realize कि actually it's very important to have and being able to communicate in your own language. तो successes तो रुखसार इस तरीके से है मेरे लिए कि seeing the moms going through these different phases, preparing them, being there with them, and even the children as they're growing, developing, going into main education, going into nurseries, and even the point of उनके साथ घर पे जाके और अपने उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको सिखाना कि भी नर्सरी में अगर अब हम देखा जाए तो एकेडमिकली हमारे बच्चे जो है ना शुरू से बहुत प्रेशर पड़ता है उनपे कि वो लिटरेसी न्यूमरेसी इनको सीखें ये सीखें. और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि सोशल स्किल्स में जो है ना हम जो है थोड़ी सी ढील दे देते हैं, वी लैक आउट ऑन इट. तो सोशल स्किल्स हैं अब लर्निंग थ्रू प्ले इज सो क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज एक तो बच्चे का बचपन उसके साथ है जो हम आजकल इतना प्रेशर डाल के बच्चे का बचपन खत्म कर रहे हैं. बच्चे को want them to grow up so fast, okay? लेकिन उनका बचपन वो नहीं होता इस तरीके से. तो एक रीजन है कि इस उम्र में जो है ना हमें करना चाहिए. तो क्योंकि most of the moms as well have grown up in those type of environments जहाँ पे play, sadly to say, could be a waste of time. खेल कूद में वक्त गुजार That's what their mind is, इनका माइंड जो इस तरह से बन चुका है कि we will incorporate the same rules and regulations in our child as well. बिल्कुल बिल्कुल. बट हम ये भूल जाते हैं कि वो वक्त और था, ये वक्त और है. हमारे यहाँ पे इस उम्र में और है, चीजें मुख्तलिफ तरीके से बढ़ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं. सोसाइटी में हम हैं वो कितनी चेंज हो चुकी है. तो वो हम चीजें भूल जाते हैं कि किस तरीके से है क्या है. और बच्चों को through play सिखाना is so important and we can teach them so much through play. It's so fascinating it is, just watching them learn these things, and it's all done while they're in their bachpan, while they're experiencing those. So being there for the moms and being there with families and parents, it's been good, and taking dads on these journeys as well. That's been such a success for me. I've actually worked with groups of dads who are also going through these emotional roller coasters. They're having to understand through their wife, what's her wife, why is she experiencing this? Is this normal? Is this not normal? How is she, having these, specific cravings? What should I do? How should I do with this? So I've worked with dads as well, and it's been just so enjoyable for them to understand
this You know, there is a journey. quote also and a poster also, image representing a mother going on a roller coaster physically, experiencing every pain and everything, but a dad mentally is experiencing the pain and the tension, stress of pregnancy. So equally, हम dad को भी जो है वो credit देंगे that he also goes through everything. Absolutely. But dad को जो है ना बस वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, वो expectations हमारे इतने हाई होते हैं कि dad should know it all, लेकिन जब Yes, dad को yes. भी नहीं मौका दिया सीखने का, जब Even या he is a उनको human engage, being. you very rarely ऐसा होता है कि dad को जो है ना भी सिखाया जाता है या बताया जाता Mm. है, कि उनको तो बस expectations दिए जाते हैं ना, this is what I expect from you, this is what I Yes, want you to do. So hats off to them as well, because they are strong exactly. pillars, and without their supports, and it's very very difficult. Yeah. So yeah, so it's been many stories, like I said, but it's a delight to be part of the journey for them, Yes, you know. yes, yes. So Yeah, I would like to say again, thank you, Ruqaiya, for completing this part 3 in a very successful way. And I hope our viewers will like this show a lot because you have shared such beautiful insights and given such beautiful guidance. So I hope new mothers, especially, they will benefit from the show a lot. And thank you once again for joining today. you're very welcome, and it's been lovely to be on this journey with yourself as well. And we hope we'll be able to Hope do we will some do more. more sessions together on different topics so that we can help more people. Definitely. Okay, thank you so much, Ruxara. Thank you. Thank you, Ruqaiya. Have a great evening ahead. You as well. Take care.